Assalamu alaikum everyone and welcome to the fifth episode of Blink Presents Digital Disruption. इस दफ़ा का हमारा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक F&B ब्रांड को किस तरह बनाया जाता है. And with us we have today Haris भाई. Haris, welcome to the show. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम. मैं बिल्कुल ऑल्दो ठीक मैं ठाक. पूछ चुका हूँ पहले, लेकिन चले, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. हारिस भाई has been kind enough to lend us his space. माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका ऑफिस है ये. और we've slightly changed the format this time. पहले हम Zoom पे कर रहे होते हैं, इस तरह हमने कहा why not have this discussion in person. Perfect. Yes, so let's get started. So, for those who don't know, I think Haris is one of the most creative brains in Pakistan right now. He's running Design Aid, Premier, DAP Pakistan, and Buzz Interactive. Both of them are doing very disruptive work, very unorthodox work, and the work is speaking for itself. Hope so. No, it is. So यही आपसे जानना चाहेंगे हारिस भाई कि ये आपको when did you get this calling कि I have to start my own agency और इस तरह का काम करना है? So let me start off officially. I am Haris Nadeem. I have founded two agencies by the name of Buzz Interactive and Design It Premier. To answer your question, यार पैसे कमाने थे तो सोचा सही कि हो गया. शुरू करते हुए डिजिटल वाज इजियर सही हो गया. एंड कंटेंट वाज ऑलवेज फन. मतलब Okay, कंटेंट में पंगे ले सकते थे आप, बिल्कुल. conversation कर सकते हैं, वो the ability to stop somebody within seconds. I Yeah, think in digital का सबसे वो कहते हैं good format था, yeah. तो I tried that. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी चीज में attention लेते गए और आगे चलते गए. सही. And when did you realize success? कितना टाइम लगा to break through? यानी कब आप इतने लेवल के पैसे बनाने लग गए कि आपने कहा कि बस अब यही करना है और आगे यही करना है और कुछ अगर मेरे को कभी भी नहीं हुआ तो बड़ा और लगेगा, लेकिन actually before even the companies were formed, उससे Yeah, पहले भी I was working with some of these brands as a consultant कह लें या part timer कह लें या okay, freelancer कह लें, whatever the word you want to use. So the effort was there, वो okay. चीजें चल रही थी, वो energy भी थी, but to be very honest, I wasn't earning much. Okay, I was just doing it कि घर का सिस्टम चलता हो तो चल सही हो रहा गया. था. It wasn't till I started and about 2021 या 2022 के स्टार्ट में आके people started सही. taking notice किया this is something, ठीक है, क्योंकि Okay, जो जिन पे हम काम कर रहे थे ब्रांड्स hmm. initially तो startups थे, but they had started making waves themselves. So Okay, people started asking ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है ना, automatically हमारा नाम आने okay, लग गया. So that was the idea. okay. नहीं, very interesting. So इससे ये मतलब आपने जो बात की वो काफी relevant है, especially for people listening and people who want to make it into the industry. Once your clients start making it, it is then that you get देखिए, recognized. if they're making money, two things are going to happen. Yeah, They're going to pay you, and जब yeah, उनकी recognition होगी तो आपकी recognition होगी. exactly. So ये I think living in modern मुझे ना वो I get this tag along के भाई आप दो चार brands के बहुत नाम लेते हैं. It's true because they built me as much as I built them. So Okay, interesting. नहीं, I think one must always remain true to their roots, and absolutely, people that help you along the journey, you must always. Oh yeah. I have a lot of those. Alhamdulillah on that. नहीं, फिट है. So on that point, वो पहली कौन सी आपकी ऐसी कैंपेन थी जिसके बाद आपको पता लगा कि okay, people have started noticing you? क्या what did you do? क्या Yeah, what so was चीज? they were technically तो मजे कि हमने बहुत कैंपेन्स भी की. पहले तो हम कैंपेन्स भी नहीं करते, पहले तो एक पोस्ट भी अच्छी लग जाती थी, oh this went viral, well and good, you know. Okay, But I think अगर मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊँ, fast forward, when we realized that a campaign format और पंगा format works very well, सही. और हमने एक डेली डेली की कैंपेन की थी, I think in 21 or Okay, maybe before that, हम लोगों ने की थी where we had to highlight the locations, but not okay, कि oh डेली डेली यहाँ है. So हम सही. लोगों ने राइम में स्टोरियां लिखी कि हमने कहा Okay, वो yeah. जो हर दिल को भाई जोहर टाउन को कर लिया, लेकिन यू हैव टू ट्राई तो लेक सिटी आ Lake गया. City आ गया. जो हर बंदे का पता नहीं मॉडल रोल मॉडल हो मॉडल टाउन सही. को. सो हमने इस तरह करके ब्रांचेस को जरा हाईलाइट किया. इट वेंट वेरी क्रेजी, तो हमें वो फीडबैक आने लगे. तो उस तरह की चीजें जब हम करना शुरू हो गए, पीपल स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग एंड वी अंडरस्टूड ओके नोबडी वांट्स टू सी बिल्कुल, द कायदे आजम मुबारक डे एंड बिल्कुल. जी 14 14 अगस्त अगस्त. मुबारक. Yeah. दे वांट टू सी कि आप पंगे क्या लेते हो और बिल्कुल, इमोशन कैसे दिखाते हो, या तपा दो या हंसा दो. बिल्कुल. हमने सब वो शुरू करना शुरू किया एंड इट वर्कड.
नहीं, इंटरेस्टिंग। सो एज दे से कि F&B ब्रांड के लिए लोकेशन लोकेशन लोकेशन, और आपकी पहली ही जो कैंपेन जो आप बता रहे हैं जो वायरल, वो लोकेशन बेस्ड कैंपेन थी, तो आई थिंक दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो F&B brands में if you dive deeper, what do you think are the gaps today? What are brands missing out on? Are they not taking risks? Yeah, are they complacent? Yeah, what do they need to change? Yeah, there are multiple things. I think risk taking is one part of it. Complacency तो नहीं मैं कहूँगा, सही। रिस्क फैक्टर उसके अलावा वो होता है ना कि the ability to spend on yourself. वो अपनी चीज पे, अपनी प्रोडक्ट पे बैंक नहीं करते हैं। Yeah. you're copying somebody else, तो आपको होता है यार Okay. मैं बस वही फॉर्मेट करता रहूं तो आ Yeah. जाए। क्विक मनी मेकिंग स्कीम, Money शायद मैं making ये schemes. करूंगा, वो मशरूम ग्रोथ वाली चीज। Yeah, तो yeah, उसकी वजह से एक मार्केट में ना हर तरह के ब्रांड बैठे हैं। एक वो आता है वो जी, ऐसा नहीं कि एवरीथिंग दैट केम ऑन माय टेबल वर्कड, आई विल बी बिल्कुल। वेरी वेरी ऑनेस्ट, थिंग्स फेल्ड। बट व्हेन वी डीप डाइव इनटू इट, एंड अगेन दिस इज नॉट बीटिंग अस, मतलब अपने आप को नहीं हम बोलने लगे हुए कि जी हम तो हाँ, परफेक्ट थे। एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट भी, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो ना, बिल्कुल शिट मार्केटिंग भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को उठा लेती है, बिल्कुल, ठीक है। बट 100%। ये लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, वो कहते हैं इट्स जस्ट मार्केटिंग। नो, इट्स योर प्रोडक्ट। वो बंदा बिल्कुल आता है पहली बार हमारी वजह से, बिल्कुल, वो बाइट लेके उसके बाद आता है आपकी वजह से, प्रोडक्ट की वजह से। हमने से उसके बाद याद दिलाना होता है वो हम हैं। यस। अगर ये थ्योरी है कि जी हर बार मैं, आई थिंक अकॉर्डिंग टू योर प्लेटफॉर्म, मैं तो सबको ही कहता हूँ, मैं तो रिटेंशन रेट आप पढ़ते हैं हाँ, वो क्या है, मैं तो ऊपर लिखा आ रहा है, अगर तो 70% रिटेंशन रेट मींस कि मैं हर बार दिन 20% लोगों को लेके आ रहा हूँ, हाँ, इट्स गुड मार्केटिंग हो रही है। इफ एवरी डे आई एम टारगेटिंग 80% न्यू, तो पुराने आपके कहाँ जा रहे हैं? पुराने कहाँ जा रहे हैं? सो इट्स एज सिंपल एज दैट। नहीं, very insightful कि brands must focus on their product. So marketing is just one aspect of it. Yeah. इस पे अभी बात करते हैं in the following questions, but before we move, इसी टॉपिक पे रहते हुए, so इंटरनेशनली हम देखते हैं कि ब्रांड्स की काफी ज्यादा मजे मजे की एंगेजमेंट हो रही होती है, चाहे वो ट्विटर पे हो, KFC टेकिंग अ बैश ऑन बर्गर किंग, देम टेकिंग अ बैश ऑन मैकडॉनल्ड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीज पाकिस्तान में हमें नहीं नजर आती। हम बड़े तमीजदार या अब अपने करना शुरू है, हमने किया पंगा, लेकिन हाँ, आई थिंक डर है, डर ये है। ना हो जाए, वो ना हो जाए, लोग कह ना दे, लोग आके मेरे दरवाजे पे खड़े होके ये ना कहते क्या होगा, जो कर जाता है यार देखो उन्होंने कितना डिफरेंट किया। या At the end, I think marketing or going out there, या even for a food F&B brand, it's about experimentation. Product भी बिल्कुल यही है ना, बिल्कुल। मतलब प्रॉब्लम इसकी हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम फेल करते हैं। सो अगर आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट होगी, वो एक्सेल या करती है, आपको भी पता लगता है कि आपने क्या अचीव किया है। वो यहाँ पे हम लोग करना नहीं चाहते, हम कहते हैं ओह दैट्स अ नाइस शर्ट, इफ हाँ, आई वेयर इट मेरे पे भी यही फिटिंग है। एब्सोल्युटली नॉट। सही सो दैट डजंट वर्क दैट। सही हो गया। सो नो कॉपी पेस्टिंग, क्या कहते हैं, नो वन साइज फिट्स ऑल, हर किसी की इफ अपनी। यू गोना कॉपी, डू इट बेटर। ओके, उससे बेहतर करो फेयर कि इनफ, इतना बेहतर करो अगला बंदा उसको भूल जाए। फेयर इनफ, बाय ऑल मींस डू इट। फेयर इनफ। एक और मेरा सवाल है रिलेटेड टू मार्केटिंग, और वही आपने जो बात की थी, एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स। सो व्हेन यू एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, क्या व्हाट इज द थिंग दैट यू फोकस ऑन, वन थिंग दैट यू फोकस ऑन द मोस्ट, कि किस तरह की अटेंशन लेनी है, व्हाट शुड बी द वाउ सो फैक्टर? ऑडियंस हम सेगमेंट कर लेते होते हैं, तो हमें पता सही। होता है कि यार किसको क्या अट्रैक्ट करता है। हर ब्रांड की एक डिफरेंट हम्म। लैंग्वेज होती है। मेरे से कोई बात करेगा, हो सकता है मुझे कोई पेंडा कह रहा हूँ, किसी और से अच्छा, बात करेगा कोई कह रहा होगा ये तो बड़ा हाई लेवल बंदा है। बिल्कुल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कौन सी कॉन्वर्सेशन किसके साथ कर रहे हैं, क्या या टोन ऑफ वॉइस है। उस टोन ऑफ वॉइस में अगर आप अगले बंदे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो आपके पास आ जाता है। तो वी ट्राई टू फिगर आउट कि किस ब्रांड की क्या बात है, ऑलराइट। और उसको एंड में, आप भी खाना बेच रहे हो, वो भी खाना बेच रहे हैं, फर्क इतना मैं ये कह सकता हूँ, इसका बहुत बड़ा बर्गर है, या इसका तो बाइट लेके खाया ही नहीं गया, बात दोनों में या सेम ही कर रहा हूँ। सो टोन ऑफ वॉइस हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। एग्जैक्टली। तो दैट्स इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये आइटरेशंस बहुत जरूरी है, और कमिंग अप विद कोहोर्ट्स और सेगमेंटिंग योर ऑडियंस एंड लाइक एक ही यू चीज यू को। हैव टू बी शैलो। जो मार्केटिंग बिल्कुल। करे ना, वो हाँ, कहते हैं ना, ओ एथिकली आई शुडंट से कि ऑडियंस में चीप लोग भी है, नहीं है यार, पैसे नहीं है, आई कुड बी वन ऑफ देम। या बट या यू हैव टू सेगमेंट, वो कैसे लेंगे, अगला बंदा क्या करेगा, जिसके पास पैसा है उसका ट्रेंड क्या है, कार्ड लगा के कौन स्पेंडिंग। जब आप ये करते हो ना, आपको समझ आता है मैंने कंटेंट किसको चैनल करना है, बिल्कुल और मैंने स्पेंडिंग भी किस चीज पे करनी है। बिल्कुल सही हो गया। यू कांट कैटर एवरीबॉडी, दैट इज द बिगेस्ट फ्लॉ इन मार्केटिंग। आप कहते हैं नाइस। सबको खुश रखो, या वो सबको आज तक कोई नहीं खुश रखा। तो सबको कोई नहीं खुश रख सकता। इंटरेस्टिंग टेक अवे, इंटरेस्टिंग टेक अवे। यहाँ पे लेट्स शिफ्ट गेयर्स टू टेक्नोलॉजी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक बज़वर्ड है,
जो काफी वायरल हुआ है पिछले हाँ 4-5 सालों से। हाँ। सो बताएं F&B ब्रांड्स के लिए आजकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कितनी जरूरी है एंड हाउ डज इट टाई अप विद योर मार्केटिंग एफर्ट्स? यार इट हेल्प्स अ लॉट बिकॉज अकाउंटेबिलिटी आ गई है। पहले होता सही। था ना कि एक बिलबोर्ड लगा हुआ है तो बहुत फायदा हुआ। या क्या हुआ उस दिन की सेल आ गई बिकॉज ऑफ द बिलबोर्ड, पता नहीं। बट द मोमेंट डिजिटल हो गया इट्स अबाउट नंबर्स। ठीक है, या क्या कैंपेन हुई, किधर कन्वर्ज हुई, उस पे कितनों ने किया, ओके ये नंबर्स आ रहे हैं। अगर ये नंबर्स आ रहे हैं ओके, दिस इज द मैथ। ऑफ कोर्स देयर आर इंटेंजिबल्स कि यार ये पता नहीं लग रहा कि ये कहाँ से ऑडियंस आ रही है। या ब्रांडिंग इम्पैक्ट थोड़े लेटर आते हैं, लेकिन आप स्टिल आइडिया ले सकते हो कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। सो उसके बगैर अगर आप कर रहे हो, आप ब्लाइंड है, वो कहते हैं ना कि जस्ट बिकॉज गाड़ी है आपके, मैं पैदल चल के जाऊंगा। बिल्कुल इट्स अप टू यू, यू कैन चूज टू बी फास्टर एंड स्मार्टर, और यू कैन चूज टू बिल्कुल। वॉक। अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन वॉकिंग, बट Yeah, yeah, स्टिल। yeah, yeah. Then interesting. So let's dive deeper into this segmentation and different channels. Awareness एक चीज होगी, driving sales एक चीज होगी. How do you balance between two? Yeah, for those listening, what would you advise कि awareness पे कितना allocate करें, driving sales पे कितना allocate करें, depending on where the So, brand is, early stage है, late stage है. I think sales secondary start. Sales is secondary. Yeah. So first off, आपने अपने आप को ना recognize करवाना है. If they सही हो don't know गया, you, they're not going to spend on you. सही हो वो गया, जो gimmicks है ना, मैं आज कोई डिस्काउंट दे दूं, चीजें कर दूं, आजकल मैं एक ऐसे जमाने में है कि फ्री की भी वैल्यू नहीं है। सही हो आप कहते गया. हैं फ्री भी, तो मैं देखता हूँ मेरे Yeah, टाइम एंड एफर्ट पे और आगे अगला बंदे की वैल्यू क्या है, कितना दूर है, कितना वो अच्छी चीज है, उस पे जज करता हूँ। yeah, सो एज लॉन्ग एज यूर विलिंग टू डिफाइन कि किसने क्या स्पेंडिंग करनी है, किसने yeah. किस तरह लेके चलना है, यूर एबल टू ब्रांड अकॉर्डिंगली। और ब्रांडिंग का कि जो ये डे टू डे आपके पैसे लगे होते हैं Yeah. चलते हैं, वो Okay, कहते हैं रिवर्स इंजीनियर करते हैं। okay. Yeah, yeah. पहले मैं बर्गर बनाता हूँ, फिर हाँ, मैं उसको बेचने की कोशिश करूँ, वो बिकेगा तो मैं इस पे पैसा लगूँ। सही हो गया. सो दैट डजंट वर्क इंटरेस्टिंग. दैट वे। यू हैव बिल्ड समथिंग। इट्स लाइक मैं कहता हूँ ना, प्लाजा बना रहे हैं। बिल्कुल. इमेजिन आप प्लाजा बनाते हुए कहते हैं पहले काम करते हैं, बेसमेंट बनाते हैं, उसको रेंट पे देता हूँ, वो चलेगी तो फिर फर्स्ट फ्लोर फिर बनाऊंगा, फर्स्ट में. फिर सेकंड फ्लोर। अगर नहीं चल रही तो मेरा प्लाजा फ्लॉप नहीं है। यू नहीं. नीड टू कंप्लीट द होल थिंग। इंटरेस्टिंग एनालॉजी आई थिंक वेरी रेलेवेंट. तो अवेयरनेस के लिए कितना टाइम लगना चाहिए एक ब्रांड को? इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, सही है, यू आर अ पिज्जा जॉइंट, आपको कितना टाइम लगाना चाहिए अवेयरनेस पे? सो इट कैन हैपन ओवरनाइट, सही है. बट कंसिस्टेंटली डूइंग इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग। ओके. मैं कल आई डोंट नो पिज्जा लोगों के मुंह पे मारना शुरू कर दूं, लोगों को याद हो जाएगा इस ब्रांड ने हरकत क्या की थी। बट अगर मैं गायब हो जाता हूँ, या उनको या टुमारो समथिंग एल्स, समबडी एल्स डज समथिंग, वो याद नहीं लगेगा। सो कंसिस्टेंटली आप अपने आप को दिखाते रहते हैं ना, या तो इट्स लाइक वो अगेन, ये जो जानते हैं मुझे, आई यूज दिस एग्जांपल अ लॉट, कि दीवार पे हथौड़ा में भी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, मारी जाए मारी जाए मारी जाए, हाँ. आफ्टर एन आवर वो बंद भी कर देगा ना, हमारे माइंड में ठक ठक चल ठक रहा ठक होगा। ठक चलती सो इट्स रहेगी. दैट थ्योरी कंसिस्टेंट। नाइस, नाइस, नाइस. इंटरेस्टिंग. सो अवेयरनेस आपने बढ़ा दी. अब यू वांट टू यूज मार्केटिंग टू ड्राइव सेल्स, क्या कहते हैं? उसमें व्हाट फंडामेंटल शिफ्ट्स हैपन, क्या कहते हैं, किस तरह आपके बजट्स डिफरेंटली एलोकेट होते हैं? क्या आपके कंटेंट टाइप्स या क्रिएटिव्स फर्क होते हैं सेल्स जनरेट करने में? मतलब व्हाट डू यू डू डिफरेंटली? सो इनिशियली इट्स अबाउट योर कंटेंट। आप चीजें दिखा क्या ब्रांड के बारे में, या प्रोडक्ट, इट डजंट टेक दैट मच ऑफ अ टोल ऑन योर डे टू डे कंटेंट। या आप अपनी मैसेजिंग के थ्रू बातचीत कर रहे हो, बट सेकेंडरी चीज आ जाती है कि व्हेन यू स्टार्ट हैविंग द प्रोडक्ट, या आप उनको बताते हो कि यार ओके, यू नो अबाउट मी, ये मेरी प्रोडक्ट जस्ट रिमाइंडिंग, ये तुम खा सकते हो। सो द क्रेविंग फैक्टर उस तरह के क्रिएटिव से रहते हैं। सही हो सो गया. देयर इज अ गुड पार्ट ऑफ इट, आई थिंक इट गोज अबाउट 70 सॉरी 60-40 हो जाता है, कि सही. 40% ऑन एंगेजमेंट एंड 60% शुड बी ऑन कन्वर्जन। कन्वर्जन्स. बट इफ यू डू द एंगेजमेंट पार्ट और द अवेयरनेस पार्ट राइट, देयर आर ब्रांड्स जिन्होंने साल साल स्पेंडिंग नहीं की, अच्छा. इंटरेस्टिंग. एंड देयर ग्रोइंग। सो एंड they're growing. इट डिपेंड्स अपॉन, लेकिन आजकल के जमाने में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं आज स्टार्ट करूं सही तो आई वोंट हैव टू डू इट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच दैट लेवल, सही है. बट है ऐसे ब्रांड्स। नहीं, इंटरेस्टिंग. सो ये एक तो एस्पिरेशनल व्यू हो गया कि हम इस लेवल पे पहुंच जाएं कि हमें स्पेंड ना करना पड़े और हम ग्रो करें बट ऑर्गेनिकली. वी कंपेयर ना, वी या कंपेयर कि ओ यू आर एट दिस लेवल, मैं कब तक यहाँ आ जाऊंगा। रियलिस्टिकली या मैं कहता हूँ 5 साल में। या नहीं नहीं नहीं, इसका 3 महीने का क्या तरीका है, या अगर होता तो हर बंदा कर रहा होता।
Problem is कि we just want to reach that level. Then अब इसी पे on the flip side, what if things go around? So you've been a part of many pivots and rebrandings as well, right? Right. So when should a restaurant owner decide कि नहीं, I need to completely scrap what I'm doing and change my approach. I need to rebrand, come up with a new name, come up with different products. So the checklists are already there. अच्छा. अगर आप logically देखें ना, हर बंदे को नजर आ रहा होता है कि यार मेरा क्या लोगो और मेरी जो लैंग्वेज है या मेरी कलर टोन्स हैं ये सर्टेन टिक्स कर रही है। वो सर्टेन टिक्स क्या होते हैं कि लोगों को हैमर हो रहा है, लोगों को याद रह रहा है, नहीं हो रहा। कहने को एक सर्टेन पॉइंट था, पुराने जमाने में जो भी चीजें आती थी हम लोग वी वर अडैप्टेड टू इट। आजकल इन सी ऑफ इट यू हैव टू सी, हर बार ना एक नया पैरामीटर जाग जाता है। ओ क्या लोगों को ये हमारा कंटेंट समझ आ रहा है, बिल्कुल, क्या ये प्रोडक्ट उनके लिए वैलिड है। तो व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चंस आपको डे 1 पे पता लग जाते हैं। अच्छा. अगेन द प्रॉब्लम इज कि वी स्टार्ट विद थोड़ा अभी ये कर लेते हैं और हमें लगता है इट्स नॉट वर्किंग। इट्स प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट सिनेरियो दैट आपने स्टार्ट किया, okay, इट्स नॉट वर्किंग। सो द स्मार्टर मूव इज अगेन अपना वजन बेच रहा हूँ, get somebody involved who knows. Okay. It's like एक घर बनाना मुझे नहीं पता, I don't know how much cement goes in. I can't say कि यार मैं अभी टेस्टिंग करके देखता हूँ, थोड़ी सी डाल के चलेगा और मैं कह दूं नहीं ये तो घर गिर जाएगा। We have to understand that there's somebody who knows this. और again nobody has 100% idea, but you still go and talk to them, यार मेरी ये प्रोडक्ट ये चीज मैं ये करूं। That's what we do. We have a checklist. हम देखते हैं ये हुआ। अच्छा इसके बाद आप ये फॉर्मेट इतने अरसे के लिए करेंगे तो X amount of आपको यहाँ रीच करना चाहिए। And you start hearing the word of mouth. आप किसी के सामने बैठ के वो X ब्रांड का नाम लेते हो तो I know about it. Then okay. This kind of person knows about it, which means इस तरह के सेगमेंट में ये जाती है बात। ओके फेयर है, सही। ये तो ब्रांड मुझे लगता था बहुत अच्छे सेगमेंट पे जाता होगा, इसका तो किसी को भी नहीं पता। सो यू शुड स्ट्रेटजी। सही हो गया। ये सर स्टॉप हियरिंग कि घर वाले क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहते हैं, वो हमेशा कहेंगे मैंने नहीं पता, तुझे नहीं पता। डोंट हियर देम, टॉक टू एक्चुअल रेगुलर पीपल, वो आपको सही फैक्ट्स बताते हैं। Great point. Talk to users, talk to customers, don't talk to friends and families. क्या कहते हैं 100%. I think the best review you can ever get is ना, मेरे दोस्त कह रहे हैं उनको ऐड नहीं दिख रहा। अच्छा सेल आ रही है, हाँ आ रही। What do you want to do? So अगर उनको नहीं दिख रहा है, probably they're not my audience. Exactly. So staying on this point, let's elaborate on Meta. I think Meta as a platform is very important, especially today for F&B brands and driving sales. मेरी दुकान चल रही है, हमारी भी दुकान, सारों की दुकानें मेटा से ही चल रही है। So what is it about Meta कि वो आपकी टारगेट ऑडियंस को रीच कर देता है इतना सक्सेसफुली, इतना प्रेडिक्टेबली? So area wise है सही। For Pakistan, the kind of users that are there that define it. Internationally भी एक different type की audience होती है। वहाँ पे फूड की थ्योरीज ये नहीं चलेगी, वहाँ पे क्लोथिंग की थ्योरी डिफरेंट होती है। So Meta ने ये चीज अच्छी कर दी है, हर एरिया के एक सर्टेन सेगमेंट के कंटेंट टाइप डिफाइन कर दी है कि क्या है, इंस्टा पे किस तरह की ऑडियंस है, फेसबुक पे कैसी है, व्हाट्सएप पे क्या है। सो यू कैन प्रोबेबली अंडरस्टैंड कि यार मैंने इस पे अपनी स्ट्रेटजी क्या करनी है। पहले ये नहीं था, पहले यू वर टारगेटिंग मैसेज और यू टारगेटिंग यार अमीर बंदा। आपको ये नहीं पता था अमीर और मैसेज में डिफरेंस क्या आ रहा है, आपको ये नहीं पता था कि हाउ कैन आई सेगमेंट इट। एक बंदा 10,000 रुपए कार्ड लगा के स्पेंड कर लेता है ऑनलाइन और एक 300 रुपए में भी गैर डिस्काउंट मिलता है। हाउ डू यू डिफाइन कि कौन कौन है? और कभी अगर आप उनके अटायर्स देखेंगे यू नेवर नो, वेट यू आर आर्गिंग डिस्काउंट पे, यू आर विलिंग टू पे फुली। सो मेटा ने ये चीज कर दी है यूजिंग उनके बिहेवियर्स। हमें बिहेवियर, अगर आप बिहेवियर एनालिटिक्स का फॉलो करें ना, यू कैन कैच ऑन कि यार ये लोग कौन क्या है। हाउ डू वी डिफाइन सर, इस चीज के लिए इंस्टा पे स्पेंडिंग करें, इस चीज के लिए फेसबुक पे करें, इस शहर के लिए फेसबुक है। और वेट आई एम सो सॉरी, इस जैसे आजकल एक आगे टिकटॉक कर ले, भाई टिकटॉक अभी नहीं पाकिस्तान में उस तरह की ऑडियंस दे रहा, बट कोई रीजन है ना वो डिफाइन हो रहा है। सो एज लॉन्ग एज यू आंसर दोस क्वेश्चंस, वेल गुड। इंटरेस्टिंग, एक दिन देगा टिकटॉक, क्या कहते हैं, आई एम वेरी बुलिश। इंटरनेशनली इट वर्क्स, इंटरनेशनली टिकटॉक की शॉप पे कुछ डाल दो, कुछ कर दो, इट वर्क्स। पाकिस्तान में टिकटॉक इज with apologies, lazy people are just making content for the sake of getting rich somehow, and in reality हाँ वो कहीं आके एज एन इन्फ्लुएंसर चीज कर दे, उसके पीछे पीछे लोग आगे खा ले, वो एक अलग चीज है। एज अ ब्रांड वहां पे पैसे लगाना अभी वो नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यू वांट टू ट्राई, डेफिनेटली श्योर। सही हो गया। नहीं, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हारिस भाई। सो एट दिस पॉइंट आई विल जस्ट रिक्वेस्ट योर ऑडियंस, दोज हु आर लिसनिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज ड्रॉप देम इन द चैट, हम वी विल बी गोइंग थ्रू देम टुवर्ड्स द एंड। सो अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात की हारिस भाई ने, फ्रॉम अवेयरनेस टू कन्वर्जन्स,
right? So please drop your questions in the chat. We will be answering them towards the end. So, awareness और conversions की बात होगी. Let's talk about engagement retention. So yeah, एक दफा यूजर आपके पास आ गया, चाहे वो मेटा से आया, चाहे आपने उसको गली से पकड़ के जबरदस्ती लाए हैं, उसको how do you keep them coming back for more? पंगे लेके. पंगे So लेके. if you are कहते हैं constantly there, so I have this habit of saying stuff that is considered unethical at times. Okay. Within my own circle, unethical भी हो रहा है, थोड़ा unorthodox Unorthodox. right? क्यों? Testing audiences. उसकी वजह से थोड़ा सा कोई हंस जाएगा, कोई तब जाएगा, कोई कुछ होता है. But you realize the base conversation isn't making do जिस तरह पहले होती थी. अगर मैं कहता हूँ ना, oh यार हसन, you're a very nice guy. Yeah. It's probably not having as much of an impact as मैं कहूँ भाई तू तो क्या फाड़ू पीता है यार. अब I am trying to uplift it. अब इसमें मैं आगे थोड़ा सा और जाऊँ कि भाई मैं 2-4 गालियाँ डाल दूँ, या मैं कह दूँ तूने जो उस बंदे के साथ वो किया, और अगला बंदा कहेगा फिर क्या किया इसने. So the curiosity factor, the पंगा, it defines it. But उसमें भी there's a very fine line. Again, as an individual, मैं पंगे ले लूँ, मैं क्योंकि 3-4 लोगों को देख रहा हूँ. Publicly, हर बंदा आजकल तो people get pissed off with everything. So we have the toughest job retaining people while staying in certain parameters. But it works somehow. Interesting. नहीं, so we also observed that brands with outrageous campaigns have higher retentions in general. मतलब data is backing this up. क्या कहते हैं? Recall value है. आपको याद रह जाए ना, if you remember it, you're gonna think about it. If you're gonna think about it, you're probably gonna engage with it. ये 3 चीजें हैं. The only difference is now engagement doesn't work इस तरह की मैंने जाके वहां पे comment कर देना है, hey, do you wanna eat with me today? It doesn't work. आजकल है डीएम कर देंगे, डीएम नहीं कर देंगे तो वैसे ही पर पब्लिक जाके बात कर लेंगे. अब अगर वो शेयर में नहीं आ रहा, yet your sales are growing, it's because आपका उसी को देख के कोई ऐसी ऑडियंस है जाके आपस में बात कर रही है. 100%. But you have to be able to give it time to understand कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है. बिल्कुल ऐसे ही. It does not happen in a day or a month or two. It takes time. Social media की usage for F&B is defined by time. The more time you give, the better chances of for you to evaluate कि मैं कितना successful हूँ. Alright. 2-3-4 महीने में तो यार आजकल के ज़माने में कुछ shift नहीं. It is very tough. Interesting. Yeah, speaking of engagement, क्या कहते हैं? I think one of our common customers बहुत मेरे लिए जिसकी recall value बहुत ज़्यादा है. So that was Dr. Saucy's Algot launch. ऐप पे आप ऑर्डर करें, ब्रांच पे जाके प्री ऑर्डर करें, और मतलब वो आपने इतनी वायरल करा दी कि it just blew up. क्या कहते हैं? The whole town was there at the branch. But it wasn't because of the campaign. Interestingly, वो campaign का नहीं था. It was because of the branding. हमसे पहले क्या हरकतें करते थे कि हम जो पोंगियां उस पे मार रहे होते थे वो लोगों को पता लगने लगी और लोगों ने देख लिया था. And the good part about smaller cities is कि हर बंदा इधर उधर ट्रैवल करता है. Somebody knew about it. फिर हमने उस ब्रांडिंग को इतना तक किया कि फिजिकल आउटलेट पे उसकी चीजें शो हो रही है. So वो जब वहां पे सिर्फ बाहर लगी, लोगों ने तस्वीरें देखी, वो ये आने लगे, तो उसकी हाइप बिल्डअप हुई. By the time we gave an offer कि ये हो रहा है, and we didn't have to spend much on it. It blew up. But वो लोग क्या 10 दिन में ही हो जाएगा? Obviously not यार. We had been building it for 2 years. तो अब वो जब गुजरात लॉन्च हुई, वो 3 दिन पहले ही उनकी क्रेजी सेल होगी, और अभी तो बहुत साइन नहीं लगा था, लाइटें ही ऑन हुई थी. So इस तरह ब्रांडिंग वर्क करती है. Nice. Interesting. नहीं, for those who haven't checked out, I would really advise that do look at Haris Bhai's work. We'll link the क्या कहते हैं website and portfolio in the video when it's live as well. Interesting. So ये तो सारी बातें हो गई awareness की, conversion की, retention की. अब we're at 2024, almost खत्म होने वाला है, आखिरी क्वार्टर है, 2025 आ रहा है. अगले 2-3 साल में what do you see the outlook? क्या कहते हैं? Are you bullish on the F&B industry in Pakistan? How do you see things evolving in the next 2-3 years? Yeah, it's going to be tough, but it's going to be easier at the same time. Okay. Tough because the competition is going to increase so much कि जो चीजें 4 साल पहले इतना से भी एफर्ट करते थे, वर्क कर जाती थी, अब वो तो कहीं है ही नहीं ना. But at the same time, with competition comes exposure. Exposure का मतलब ये है कि अब everybody, आजकल ऐसे ब्रांड हमारे पास आ रहे होते हैं that you might not have even heard of. पुराने भी होते हैं और नए भी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं. They know this is the first step. So it's working both ways. For us, alhamdulillah, whoever shows up,
It's the case studies that help. So Okay. we don't give them मंजन के देखिए 2-3 Yeah, महीने yeah, में क्या होगा, हम उनको पूरा बताते हैं, उसका उनकी चॉइस है. yeah, But good part is they're not understanding. So yeah, मुझे 2-3 साल में ये उम्मीद है कि पाकिस्तान will at least understand if it is easier to operate businesses here. yeah, Exposure बेहतर हो जाएगा. yeah. Alright, so interesting. नहीं, ये आपने बहुत जरूरी बात की और अहम बात की है कि एक बिहेवियरल सेट माइंडसेट शिफ्ट आ रहा है लोगों के जहनों में. And I also feel that it is going to be for the better. So proof is going to be very important. What have you done for other brands, if not some even different brands? It's a case study ना, जो पहले किया हम apply करते हैं, कभी-कभी works, कभी-कभी doesn't, but the time factor is there. And there are brands who have been branded after 3-4 years. वो भी एक shift देख रहे हैं. Yeah. So और ऊपर से tech ने आ रहा है. There's so much I think advancement in tech. If you're not utilizing it, तो stupidity है. लोग क्या करते हैं, the base work is fine, कि वो जी AI use कर रहे हैं तो ये कर दियो. Yeah, use it with other things combined and then see क्या होता है. And again, rely on content. हमें क्या लगता है, अच्छी वीडियो are still so powerful कि they attract and we have case studies for it. But of course, उसने वीडियो की तो जी हम भी करेंगे. So ये mindset अभी है. It's gonna take some time. Very interesting. We have to move beyond copying and we have to like come up with a method behind all of this madness, right? It cannot be left to chance के viral हो जाओगे या ये हो जाएगा वो जाएगा. Everybody wants to be viral. हाँ. मतलब logically मैं आपको ये आपकी वीडियो आज viral हो जाए, do you not want that? आप कभी कहेंगे नहीं, ठीक है? But fact of it is, जो हम बात कर रहे हैं, जो conversation कर रहे हैं, ठीक है? वो किस level पे होती है? And ये मैंने आज से 7-8 years ago एक बंदे को एक interview में जवाब दिया था. I guess it's luck. Okay. I could be saying the same thing, you could be saying the same thing. Okay. आपकी किस्मत है, आपने सही टाइम पे सही बात पे सही लोगों ने उस दिन रात को बैठ के देख लिया, you go viral. मुझे किसी ने चने भी नहीं दिए. So that's how it works. Interesting. नहीं, काफी अच्छी insights share की हैं हारिस भाई आपने. I'm sure the audience would be enjoying this as well. So let's see if we can get some questions towards the end. I'll get your learnings and takeaways towards the end. अभी थोड़ा time audience को देखते हैं. So एक सवाल अब्दुल्ला साहब ने पूछा है. Hello Haris, great session. Can you please tell us what role does storytelling play in building a memorable F&B brand? It's the foundation of it. उस स्टोरी से लोग रिलेट करेंगे तो आएंगे. उस स्टोरी से रिलेट नहीं करते, you're just a joint where अगर डिस्काउंट नहीं है तो मुझे कोई फायदा नहीं है. आपको ये भी नहीं पता होता वो चीज दे क्या रहे हैं. स्टोरी इज द रीजन यू कनेक्ट विद एनीबॉडी. आप किसी की स्टोरी जानते हो, again with apologies, they could be butt ugly but you would still want to talk to them. But logical बात है. But अगर आपको उससे उसकी स्टोरी से नहीं रिलेट करते, it doesn't matter कौन आ जाए. कभी कभी हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते, पीछे से पन्ने खान होते हैं, लेकिन we don't care. So storytelling is the foundation. And what are some tips and tricks to improve your storytelling? क्या structure follow करना चाहिए? How do you build a narrative? Storytelling किस तरह So different होता है. The branding part defines it कि जब हम branding पे कुछ theory बना रहे होते हैं तो हम देखते हैं क्या लेके चलेंगे. Illustrative है, नहीं it's out there, bold है, sober है, क्या है. उसके बाद हम जब ये keywords define करते हैं, फिर हम कहते हैं ऐसे होगा क्या होगा. अभी मैं वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसपे अभी मैं आपको चीज दिखा रहा था, वेयर हम एक आलू से स्टोरी बना रहे हैं. सो आलू से इतनी आउट देयर स्टोरी बना रहे हैं कि बैठ के क्या करे तो भोगी मारते. अगर वो ये कर रहा था, नहीं अगर वो कर रहा था. तो अगर आप, मैं समटाइम्स व्हेन पीपल आस्क मी डैप क्या काम करता है, मैंने कहता है देख कैमरा लगा रहा हूं, सुन रहे हमारी बातें. बीटीएस लोग जेल में डाले, पता क्या बकवास कर रहे थे. बट दैट्स हाउ इट कम्स आउट. Nice. So next question we have from Zukhruf. How do you create content that resonates with a diverse audience and drives engagement? So not all content resonates with them. Like I said, is very wide. So हमारे segment के साथ resonate करता है, हम उनके मुताबिक बनाते हैं. अगर if I want to piss somebody off specifically कि मैंने इस audience को negate करना है, किसी और को target करना है, तो मैं specifically बनाऊंगा ऐसा के content के उनकी notice में आए, but जिनको मैंने तपाना है, मैं उनके लिए wording भी वो use करूंगा कि क्या कर सकते हैं. So your segment defines कि आपका content कैसा है, not the other way around. Content की base पे आप हो सकता है आपका brand tier A के लिए और आप content tier D के लिए बना रहे हो. आपको लग रहा है ये बहुत viral होता है because मेरा दोस्त इस बात पे हंसता है, but वो tier A को फर्क नहीं पड़ रहा. So you have to see कि आपका segment क्या defined है brand का, that the branding defines, and then the content is something that follows. No, I think this is very relevant even for the masses. The FMCGs जो mass market में जा रही है, वो भी एक niche को ही target करती हैं. Like the ads are targeted for
That's housewives या youngsters, it's not. yeah, हाँ but उसकी एक रीजन है, आई थिंक उसको मैं और करता हूँ, इट्स टेर हायर स्पेंडिंग ऑडियंस. हाँ सो द हायर स्पेंडिंग ऑडियंस हमारे पाकिस्तान में जो हालात रहे हैं, वेदर कुछ भी आया हो, कभी yeah डाउनफॉल भी आता है, कभी मुश्किल हालात, कोविड आ जाए, yeah स्पेंडिंग ऑडियंस हैज द कैपेसिटी टू सस्टेन. yeah सो एज अ ब्रांड अगर आप उनको टारगेट कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली बाकी सारे टेयर्स आपको फॉलो करते हैं. okay सो दैट इज द रीजन लोग टेयर को करते हैं. बट स्मार्टर पर्सन नोस के मैंने किस तरह टेयर बी को भी टैप करके टेयर okay ए को दिखाना है. सो yeah ये बड़ा इट्स स्टिल कॉम्प्लिकेटेड, guerrilla marketing. गुरिल्ला मार्केट, बट यू Yeah स्टिल हैव टू एक्सपेरिमेंट. आई थिंक दैट्स द बेटर आंसर, कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, यू आर नॉट रियली yeah चेकिंग, यू आप कह रहे हैं ना, एक अफर्मेटिव आंसर दे रहे हैं, मैं ये yeah करूंगा, वो काम नहीं किया, और डैम इट, मेरा सेगमेंट खराब था, नहीं, यू आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग. सो एक्सपेरिमेंट. experiment, keep experimenting. Great advice, great advice. Let's move to the next question. ये है अमार की तरफ से. What are the most common mistakes you see F&B brands making with their branding efforts? लैक ऑफ गुड विजुअल कंसिस्टेंसी, प्रोडक्ट बहुत प्रोडक्ट को कभी इंटीग्रेट नहीं करना, स्पेंड नहीं करना डिजिटली, बेयर मिनिमम में काम चला Okay. लेते हैं, मेरे दो इतना मेरे पास आ रहा है काफी है. इंटीरियर्स पे ब्रांडिंग को रिफ्लेक्ट नहीं करना, नोबडी वांट्स टू जस्ट शो अप एट के शॉप, और कंपैरिजंस. आई थिंक Yeah. द बिगेस्ट स्टुपिडिटी ऑफ आजकल की मार्केट की है कि वो कंपैरिजन क्या करेंगे 10 साल पुराने ब्रांड से या 6 साल पुराने ब्रांड से. उनका टाइम, उनकी टाइम डिफरेंट थी, उनका Okay. सिनेरियो डिफरेंट था, सो यू शुडंट मिक्स दोस अप. आई थिंक दैट इज वन थिंग आई वुड से, कि हाँ बी श्योर अबाउट दैट. be relevant और दिल खोल के spend करें, मतलब क्या कहते हैं, दिल खोल के करें, टेस्ट करें, टेस्ट करें. बट एटलीस्ट आजकल के जमाने, आजकल स्पेंडिंग ज्यादा हुई है, टैक्सेस ज्यादा हुए हैं, आजकल मुश्किल हुआ है, तो Yeah. डोंट जस्ट डू व्हाट वर्क फॉर समबडी इन द पास्ट 5 years. Yeah. आपके अभी के सिनेरियो को देखें, और वो एक्सपेरिमेंटेशन से अभी भी टुडे, बट फिर एक्सपेरिमेंटिंग, और अगले महीने में कुछ और होगा, उससे अगले महीने कुछ और होगा, और जो 3 चीजें में से जो 2 चीज वर्क करेंगी, Yeah. Yeah. हम उसको शायद 6 महीने Yeah. करते हैं, 6 महीने बाद हमें पता है दिस इज ऑब्सोलीट नाउ, Okay. कुछ नया चेंज करना है. Nice. तो हमारे लिए भी सबसे टफेस्ट चीज यही है कि एवरी डे फिगरिंग आउट वुड दिस वर्क. अगेन गालियां भी पड़ी, Yeah. we're okay with that. That's part of the trade. Interesting. Next up, we have one from Aman Imran. Food brands and restaurants are now using CGI and AI to create content. Now, Zomato in India has banned restaurants on their app who are using AI-generated food images. What is your take in that? Is it okay to do this? Yeah, so यार कंटेंट के लिए यूज कर लेना इज समथिंग स्मार्टर, कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करा, प्रोडक्ट यूज पे बना रहे हैं, तो ये मतलब टेक्निकली अनएथिकल है ना, अगले बंदे को दिखा कुछ रहे हैं. बिल्कुल. हाँ. यहाँ तो पाकिस्तान में वो तो चलो फिर यार एआई यूज करें, यहाँ पे दूसरे ब्रांड की तस्वीर कॉपी करके कहते हैं हमारी प्रोडक्ट है. सो वी देयर वाज अ टाइम अपने डेली डेली के मेन्यू के प्रोडक्ट्स वी सॉ ऑन 17 डिफरेंट ब्रांड्स मेन्यू भी Yeah. हुए थे. सर ऊपर डेली डेली की जगह ना कुछ और लगाता था. तो यार इनका मैथ कहाँ कनेक्ट करता है कि हाउ वुड दिस वर्क. Yeah. बट यहाँ पे डिफरेंट है, सो एथिकल एस्पेक्ट पे चेंज करें. बट या फॉर द कंटेंट एब्सोल्युटली यूज इट, भाई रगड़ दो. मैं कहता हूँ जितना बिल्कुल पंगे ले सकते हो लो. बिल्कुल. नहीं, एब्सोल्युटली एग्री कि प्रोडक्ट के लिए तो एआई जनरेटेड इमेज बिल्कुल भी वो नहीं. एक बार खाने के बाद ना हाँ. नैरेटिव हो जाएगा, ओ इनकी चीज ये, दिस इज फेक, डोंट ऑर्डर फ्रॉम हियर, ऑर्डर फ्रॉम समवेयर एल्स. हाँ. सो द स्मार्टर मूव इज कि यू मतलब शूट पे पैसा लगाएं, पे अस. Pay the professionals, let professionals take care of your product shoots. डू इट राइट. डू इट राइट, क्या कहते हैं, वही वही ना, कि मैंने कभी रिसेंटली लिंक्डइन पे एक एआई जनरेटेड बिरयानी की तस्वीर लगाई थी. वैसी बिरयानी मैंने किसी रेस्टोरेंट में सर्व होते हुए नहीं देखी. नहीं वो भी एक बार आई थी. बट अगेन ये Yeah, चीज है कि yeah. कंटेंट में फनी बात करने के लिए ठीक है, बट रेस्टोरेंट्स मिस यूज इट. या वो नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट अप इज सरमद सलीम. सर, एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्लाइंट्स मानते नहीं हैं. एनी सॉल्यूशंस एट बिगिनर्स लेवल? Yeah, find one client. Don't sell it to 10. You just need one client to back you. अभी the सही. good part is, even when I was starting, मुझे याद है 2-3 clients को मैंने इतनी चीजें बोली थी, नहीं मानते थे. 1 or 2 वर्ड, कभी कभी फड्डे डालने पड़ते, लड़ना पड़ता है. Sometimes you have to say no, कि मैं आपके साथ आगे काम नहीं करूंगा अगर आप मौका नहीं दे रहे. Problem is you have to give something up. There were times कि people were not following what we were saying, so Yeah. we stopped working with them. Again, ये हमारी जेब पे हिट थी, but पर्पस ये था कि यार ये 2-3 महीने चलेगा नहीं, तो 2-3 महीने बाद जाना है तो अभी चला जाए, नहीं. so you have to, Yeah. आपको वो कहते हैं ना, you have to take a hit to be able to Yeah. do something, so वो हिट लेनी पड़ती है. नहीं, sound advice, and I would agree with that, कि part ways early और फिर focus on the future. बिकॉज कोई एक भी वर्क कर जाएगा, सारे Yeah. कहेंगे वो हमने वो करना है, तो वो उसके बाद Yeah. फॉर अगेन मैं किसी को वो एडवाइस नहीं दे सकता जो मैंने नहीं अप्लाई किया. इट वर्क फॉर मी, आई डिड इट विद 1 or 2 ब्रांड्स.
उन्होंने अलाउ किया, उसके पीछे पीछे देखा देखी सबने कहा ये जो कर रहे हैं आप ये कर रहे हैं, लाए दे, इट वर्कड. Interesting. Next up, we have Anas Faruqi. What should be the checklist before deciding to work with a client? Like some clients have this ego that they know better than us, etc., which is a red flag. So your checklist should be you should have a bigger ego. ठीक है. या देखो, first analyze, do they have the money साल के लिए. Don't say कि अगले 2 महीने के पैसे हैं नहीं है. Okay. क्योंकि हर बंदा कहता है अभी स्टार्टअप में Yeah. अभी सिर्फ 2 महीने का बजट देख लें, और भाई वो 2 महीने बाद नहीं देगा, और 2 महीने में क्या हो जाए, पैसे जाया हो जाते, कुछ चीज होती है. So see कि if they have the spending power to actually do this for a while, Yeah. then plan it out, because then Yeah. you know कि वो हर 3 महीने बाद ये नहीं करेगा, हाय पैसे मुक गए, आय नहीं हो गए, तो बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, ना करो. Yeah. अगेन मैंने भी तब तक नहीं कंपनी स्टार्ट की थी जब तक आई वाज़न्ट श्योर कि मैं पैसे दे सकूंगा. Yeah. इट टुक, मुझे बहुत हिट्स पड़ी इस बात पे, बिल्कुल. बट व्हेन आई डिड आई टुक अ रिस्क. सो रिस्क लेने वाली बात है. बिल्कुल. So before we move to the next question, इसी point पे ना I would like to elaborate more, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी point है, especially for people listening, budding entrepreneurs, कि creativity की बातें कर ली, campaigns की, virality की बातें करनी, लेकिन साथ साथ आपने धंधा भी बनाना है, so business की भी बातें करनी है, right? So how do you balance cash flows, किस तरह balance करने, projects किस तरह लेने हैं, working capital क्या होना चाहिए, इस पे कोई आपकी Yeah, so advice? one thing, I wasn't ever in a hurry to get more clients. I still currently am not. कोई आता है, I know what I need to charge, I know what I need to get paid upfront, because मेरा staff बैठा है. I can't tell them कि यार oh I'm so sorry, वो पैसे नहीं दे रहा तो मैं तुम्हें नहीं दे रहा. Yeah. So upfront बहुत अच्छी बात. आपको लगा जिंदगी में दोबारा मिलेंगे, फेयर इनफ. वो जो पाकिस्तान में एक साल हम आपको देंगे यार, आप तो भाईचारा हो गया. फेयर इनफ, भाई बहन नहीं होता यहाँ पे. सो पैसे पहले अपने लिए, अगर उसने बाद में भी देने तो अभी भी देते, उसको मसला नहीं होगा. The only thing you can control is your own. आपको पता है कि आपने डिलीवर करनी चीजें, तो आप अपने पैसे पहले ले. अगर आपको डाउट है कि आपने बाद में भाग जाना है, so how do you? Interesting. और कितनी देर आप खुद एज अ सोलो एंटरप्रेन्योर करते रहेंगे, और व्हेन यू ऐड मोर पीपल Till you know you can retain yourself, because बंदे आते जाते रहते हैं. It took me about 6ish years to find a very stable team. Although हमारी retention बहुत अच्छी in terms of team, but perfect pieces मिलना और उन लोगों का sustain होना और आगे वो उनकी growth और उनकी learning होना, it takes time. तो अगर आपको नहीं तब तक आता तो आपकी कंपनी नहीं sustain होनी. So I have sat down, I have designed, I have run ads, I have made content, I have done community, I have gone on shoots, I have food styled. Nice. मैंने क्या नहीं किया, मैंने जाके कुर्सियां भी लगवाई हुई है. So the only reason was I never want to be reliant on people. But now that the team is built, alhamdulillah, if they're excelling better than me, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब मैंने अपना वो base foundation से देख दिया. Nice, interesting. अच्छा, next up, it's not a question, बल्कि it's a compliment from Aman Imran, and they're saying कि I saw Novu's Arshad Nadeem post and I'm a fan. This is the reason I am here listening to you right now. क्या कहते हैं? Sir, thank you. Sir, पंगे ले रहे थे, it worked, and I appreciate it. Thank you so much for that. So speaking of Arshad Nadeem, इस तरह की moments को किस तरह capture करना चाहिए, because there is no way you can prepare for it, right? So once something like this happens, how can brands leverage this? Yeah, so on spot leverage होना चाहिए. हम लोगों का भी ये था, माया वो सुबह हुआ तो एम ही बैठे यार should we do something? So we have a lot of brands, not everything fitted in. तो पहले तो realize कि हर चीज पे अरशद नदीम अस्सलाम वालेकुम सलूट करना जरूरी था, पर जहां देखा यार इस पे कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, इस पे आई थिंक वी कैन डू. ये भाई भी रोएंगे कि पे ना किया तो इनके लिए भी कर दो, बट देन कंटेंट पंगे ले. सो यू हैव वेरी स्मॉल टाइम. लोग क्या करते हैं, हमें कैंपेन बिल्ड करने में टाइम लगेगा, जब तक अर्शदीप दूसरा गोल्ड मेडल ला रहा होगा तब तक कंटेंट बन रहा होता है. सो you have to be very fast. You have to be very fast. Approval skip करने पड़ते हैं, चीजें होती हैं, तो उस पे अगेन ईगो आ जाती है कि यार आई सॉ डिसीजन, आई टुक इट, ये हो गया. जितना आप उसको डिले करेंगे आपके लिए दिमाग की नहीं पड़ेगी. बट या आई थिंक यूटिलाइज करना चाहिए and acknowledge भी करना चाहिए. If something good about this country or is happening, you should, but not in a generic way कि उसका ना आपको impact है ना उस बंदे को फायदा हो रहा है. So कुछ ऐसी चीज करो कि अगला बंदा ने क्या हो कि उन्होंने दोनों चीजें लिंक की, ब्रांड भी लिंक हुआ, उसको भी किया है and acknowledge किया. Good enough. Interesting. So next question is from Paras. How can new F&B brands differentiate themselves in a crowded market? Yeah. Someone starting new, किस तरह वो करेंगे? So number one is the product. If the product is just a copy of 10 other products, पहले तो वहीं पे conversation खत्म हो जाती है कि जो मर्जी marketing कर लो,
eventually it's going to take time for people to be convinced that this is a better product, क्योंकि it's a food subjective, it's like design, आपको कुछ पसंद है, इनको कुछ पसंद है, so you can't convince everybody you're better. Yeah. So पहले तो प्रोडक्ट इनोवेशन, उस पे लोग क्या करते हैं, एक आज टेस्ट किया, कल दोस्तों को खिलाया, परसों का लॉन्च कर देना. You put in time 3, 4, 6, 7 months, a year. When you build on that, उसके बाद यार definitely you see कि आपने बाकी parameters क्या करने हैं. अगर वो parameters आपके टिक होते हैं, fair enough. अगर वो नहीं हो रहे, I think branding and ये चीजें are a necessity. You need to spend on it just like आपने एक brick and mortar पे करना है. So if you're not doing that, I think that is the definition कि you're not ready for it in simple terms. Interesting. So I also agree. Product आपका solid होना चाहिए. So in a lot of my conversation with restaurant owners, मैं कहता हूँ आजकल 3 pillars आपके बहुत ज़्यादा हैं. Marketing is right there. आपके operations और आपकी technology, right? Marketing है वही आपकी बात, awareness, conversion, लोग आएंगे. Operation ये है कि अगर उसको 20 मिनट में गरम बर्गर और ठंडी बोतल नहीं मिल रही तो वो दोबारा ऑर्डर नहीं करेगा, राइट? और टेक्नोलॉजी ये कि ऑर्डर आ गया और वो डाउन तो नहीं होगी, किसी और ब्रांच पे तो नहीं वो चला गया. सो इन तीनों चीजों का हाँ, इन तीनों चीजों का क्या कहते हैं साथ चलना बहुत जरूरी है. आई एम श्योर ब्लिंक के साथ आई होप नहीं हुआ क्या कहते हैं, बट दिस डज हैपन. इट वाजंट ब्लिंक बट दिस डज हैपन. क्या कहते हैं, इफ यू आर नॉट यूजिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी, द फनीएस्ट थिंग्स हैपन एंड दे हैपन एंड हम लोग ना ये भी है, कुछ नहीं होगा परफेक्ट, हम परफेक्ट है नहीं यार, मेरे से भी बहुत गड़बड़ होती है, बट आई गो टू देम, आई एम लाइक आई अपोलोजाइज, ये हुआ है, माय अपॉलॉजीज, सिंपल एज दैट. Alright, so Aman Inam again. Yeah, a lot of questions. Would you go after any brands which comes to you, or are you selective? How do you decide which? We're selective. We're 100% selective. Okay. One, they come to us, we don't go. I hate pitching. मैं किसी को जाके pitch नहीं कर रहा, आप मेरे पास काम करें. मैं किसी के expectation पे आना नहीं चाहता. You want work, show up, आप काम दिखाएं, देखें हमारा अच्छा लगता है, हमारी प्राइसिंग में मैच होती है, काम शुरू करें. अल्लाह का शुक्र है, that thing works, whatever, अल्लाह इज्जत देने वाला है, लेकिन अगर वो चल रहा है, वो चल रहा है. उसके बाद अगर किसी ने आना है, well and good, उसके बाद काम हमारी मर्जी है, हम जिस तरह म्यूजिक चलाएं, वो we don't listen to them, simple as that. All right, interesting, fair enough. No, I think you have to be selective. You can't spend all your energies in pitching to everyone. क्या कहते हैं? And even आप भी जाए तब भी selective. अगर एक बंदा आपको लग रहा है पंगेबाज है, egoistic है, बजट नहीं है, कुछ है, आप ये देखो ना कि यार आपने काम क्या करना है. Again, I understand कि starting में you take on everything, and I did too. I'll be honest, I took on some shitty brands. ठीक है, I don't want to name them because again लोग पीछे अच्छे भी थे. लेकिन fact of it is, if you're establishing yourself, be selective, क्योंकि आपकी reputation भी at stake है. It's very easy to say, oh वो बहुत बुरा है, ठीक है, but fact of it is कि चीजें नजर आ जाती हैं eventually. So just be honest with yourself. 100%. सरबत सलीम, market is getting saturated day by day. Sessions ज़्यादा किया करें ऐसे. Alright, तो ये कर लिया करेंगे. Thank you, सरबत. चलें, so I think और questions नहीं है, so we'll move towards our final thoughts. क्या कहते हैं? Haris bhai, like a pleasure firstly hosting us, and I think first time we are doing this format कि हम आपस में सामने बैठ के live webinar कर रहे हैं as opposed to being on Zoom. दूसरा, I prefer this. Zoom पे मेरे से भी नहीं होता. Exactly. दूसरा ये है कि we have a lot of common customers, and in the future inshallah there are customers on both sides that we like to work on. आप क्या मतलब दो पैगाम मैं चाहता हूँ, एक F&B owners के लिए, the decision makers who are driving that, what they need to invest in today to make sure that their brands will reap the rewards in the years to come, or how important is it for them to invest right now? So I think branding and ये जो digital के जितने asset building है ना, इसके ऊपर this is the reason I do understand कि brick and mortar is needed, but आजकल यार ghost kitchen का भी concept इतना अच्छा है. कहते हैं ना, physically on a digital ecosystem आप एक बना देते हैं, you don't need to be there, you just need a kitchen to operate. So इस पे spending, इसको छोटा ना करें, इस पे spending करें. And today this is the time, because जगह कम है, चीजें लोगों को समझ नहीं आ रही. So pick a segment, घर में kitchen है, ghost kitchen है, whatever it is, but build on these assets and then try. And product को अगर आपने अच्छा रखा हुआ है, it'll pick up. I think it is the easiest time to invest on. All right, perfect.
और दूसरा है for the young people, the future, our hope, क्या कहते हैं, budding entrepreneurs, people stepping into marketing, creative agencies, people who want to set up their own shop. What advice do you have for them? Experiment, पंगे लें. The पंगे लें. problem with willpower and experimentation is ना कि we have people come over, वो मैं तो इतना नहीं कर सकता, मेरा तो दिमाग इतना ही चलता है, या मैं इससे ज्यादा नहीं. So यार पंगे लो, अगर आपने नहीं लेने. I tell my team and alhamdulillah they're the people who make sure कि मेरा इस चीज पे belief और strong हो. If you're good enough, people will remember your name. So All right. अब मेरी टीम में जो लोग हैं, and most of you probably have figured it out, they're very good people. वो उनको यार आप मार्केट में आपको पता है ये बंदा ये कैंपेन करता है, प्राउडली टेल यार ये रमला ने की, ये शर्जील ने की, ये हसान है, XYZ. I enjoy the mentioning them because they're doing the experimentation. It's not me कि मैं डंडा पकड़ के कह रहा हूँ ये नहीं किया वो नहीं किया. So if you're you know doing something to promote yourself, ये करो ना कि यार मैं आज घर बैठ के 9 बजे तक, मैं 6 बजे घर पहुंच जाऊं तो बस मैं क्या करूं. Again, I understand not working overboard, not burning out, लेकिन यार I'll say this and it might be controversial. 6 महीने साल में कोई burn out नहीं होता. It's just bullshit. Yeah, 100%. Maybe with that, I think thank you for your time. Very interesting and insightful क्या कहते हैं webinar. I think your team is also returning for lunch. Yeah. So thank you so much, Haris bhai. Pleasure as always. And thank you for everyone who joined us. Inshallah, we'll see you in the next episode. Likewise. Allah Hafiz.